and welcome to Amrita Raichan Chef and Beyond. Welcome to my new studio. Well, आज इस किचन में ये पहली रेसिपी बनने वाली है. तो क्या बन रहा है आज? आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पनीर, फ्रेश पनीर घर में बनाते हैं और फिर बनेगा पनीर कटलेट सिजलर. Excited? Let's begin. अब पनीर हमारे लिए इतना हेल्दी होता है. इट्स फुल ऑफ प्रोटीन. इट हैज ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स. इट हैज सच गुड फैट्स, सो मच कैल्शियम. लेकिन लोग पनीर खाते ही नहीं, भाई महंगा है. तो चलिए आज घर पे बनाते हैं फ्रेश पनीर. सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होगा. लेट्स बिगिन. ऑलराइट, अब दूध को उबलने देंगे. अच्छे से जब खौलेगा तब इसे फाड़ने की तैयारी करेंगे. बीच बीच में हमेशा दूध को हिलाते रहिए, नहीं तो मिल्क सॉलिड्स नीचे पैन में चिपक जाएंगे. और देखिए जैसे ही हमने नींबू डाला दूध में, किस तरह से ये पूरा फट गया है. पानी इज कंप्लीटली सेपरेटेड. बस थोड़ी देर इसी पानी में उबलने देंगे बिफोर वी स्ट्रेन इट आउट. Now we are just going to strain this entire water out. ये अच्छे से स्क्वीज कर लिया. अब इसे आप हैंग कर दीजिए थोड़ी देर और, ताकि जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए. हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए हमें सॉफ्ट पनीर चाहिए. अगर आपको स्ट्रक्चर्ड पनीर चाहिए तो इसके ऊपर कुछ हैवी वेट रख दीजिए और कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए. यू आर गोना गेट अ नाइस ब्लॉक ऑफ पनीर. एंड हियर माय यमलिशियस फ्रेश पनीर इज रेडी. अब चलिए इसके साथ हम बनाएंगे कटलेट, फॉर विच आई एम एडिंग दिस टू अ बोल. बस अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे. Then we are going to shape it into cutlets. ये अब cutlets बन गए. Now we are going to grill them. Wow, look at this color. We want it to be nice and brown and slightly crunchy to add that extra element of texture to our sizzler. All right, so the paneer cutlets are ready, which is the first and the most important component of our sizzler. Now, let's get on with the rest. I'm just going to take this out in a plate. Looking crunchy, huh? Okay, so components में क्या-क्या बनेंगे? We are going to caramelize some onions, we are going to saute some vegetables, and we are going to prepare herbed rice. After which, some yummy sauce, and then the final magic. Onions caramelize करने समय you have to keep 2 things in mind. Onions के slices थोड़े मोटे-मोटे होने चाहिए, and then when you add it to a hot pan, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, because you want it to get charred nicely from one side before you turn it around. Now you can break this apart and let it cook on low heat.
Okay, now the magic of sauteing these vegetables is on high flame. So you need to make sure it's quickly done and on very high flame. And it's done. All right, the rice is done. All right, so all the major work is done. Rice is ready, sauteed vegetables, caramelized onions, and of course, our paneer cutlets. अब चलिए sauce बनाएंगे, yummy pepper garlic sauce, and then sizzle. Alright, जैसे ये bubble करने लगे, I'm going to add some corn flour slurry, 1 tablespoon of corn flour and about a couple of tablespoons of water. And now we're going to mix this well. Now the most important part. ये जो sizzler plate है ना, इसे हमें बहुत अच्छे से गरम करना है, about 10 to 12 minutes before we start the assembly. Let the sizzle settle and then dig in. And while you're at it, don't forget to share this recipe of homemade paneer cutlet sizzler with all your friends and family. And don't forget to subscribe to Amrita Raichan, Chef and Beyond. See you soon.